नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने I found some students collecting there and discussing among themselves. Probably that was a confusion regarding time, right? 10 o'clock to 11 o'clock or 11 o'clock to 12 o'clock. It was changed actually while I was leaving, and someone was informed of this, and Swamiji asked him to inform everyone else. It was announced? Okay. So, all of you know the change of time? Okay, good. Now, this is a very short talk. We had 2 hours talks usually, and now this is just a 1 hour talk. Actually, in fact, I didn't take notice of that. Only Swamiji reminded me that it's going to be a very short 1 hour talk. And we are here focusing on certain words like Vaidika, PauraNika, and these 2 words, Vaidika and PauraNika, are Sanskrit words, so our words, Indian words. The other word, interculturality, is a different word that is coming from outside English word. And in that we added Aagamika also with regard to PauraNika. Now, if you talk of, say, for example, Shiva, with long hair, matted hair, with a Ganga on the head, moon on the head, snakes crawling all over his body, and all this. Do you find him in Vedas? Do you find him in Veda mantras? Do you find him or not? No, you don't find him in Veda mantras. Do you find the word Shiva in Veda mantras? Yes. You find the word Shiva there. There is this Ganapati, the word Ganapati. And when we utter the word Ganapati, we remember the elephant-headed god, right? And we know everything, Ekadanta, all those features of him. Do you find this Ganapati with Ekadanta, Gajanana, all these things? Do you find him in Vedas? You don't find him in Vedas. You find him only in Puranas. Shiva with snakes crawling all over his body, third eye, Ganga on the head, matted hair. All this is found only in Puranas. In Vedas, do you find the word Ganapati? Yes. Very popular, Gananantva, right? You know, so Ganapati is there, the word Ganapati is there, but the elephant-headed god is not there. You have Krishna. When I saw this boy, I remembered Krishna. So you have Krishna, the flute-playing Krishna, Radha Krishna. Do you find Radha Krishna in Vedas? Do you find him? You tell me. Do you find him in Vedas? No. Is Krishna a Vedic god? It's very difficult for him.
He cannot agree. He cannot agree that Krishna is not a Vedic god. Okay, yeah. So that's the dilemma all of us have. Not only you, all of us have. Not only that boy, every one of us has this dilemma of whether saying that he is a Vedic god or not. So Krishna is found in Puranas, he is not found in Vedas. Most of the gods and goddesses that we worship are found in Puranas, they are not found in Vedas. Rama is found in Ramayana. Is Ramayana Purana? Okay. So you have been told that Ramayana is a Kavya, Bhagavata is a Purana, Mahabharata is an Itihasa. But read Rajasekhara, Kavya Mimamsa. He calls Ramayana and Mahabharata also as Puranas. Puranas only. These vocabulary that this is a very popular level, school level vocabulary that we have Ramayana as a Kavya, Mahabharata as an Itihasa and Bhagavata as a Purana. But as a broader category, when you grow, when you gradually understand, like Rajasekhara in Kavya Mimamsa, you will also realize that all these belong to the same corpus called Puranas. So Ramayana is also a Puranic work, and you have Rama as a Puranic god. So Rama is also found in Puranas. He is not found in Vedas. The modern people, the Indologists and all the university scholarship tells you that if you have to use the word Vedic, he has to be there in Vedas. For anything to be called as Vedic, it has to be inside the Vedas. If it is there in Puranas, he cannot be called as a Vedic god. So for them, Rama, Krishna, Ganapati, Shiva, all these are Puranic gods. They are not Vedic gods. But we call ourselves, all of us call ourselves as Vedic people. We are all Vedic. And for us, Rama is also Vedic. Krishna is also Vedic. I agree, my friend. Okay, Krishna is also Vedic. Radha is also Vedic. All the culture in which we participate, our Ganapati, our Shiva, all this is Vedic. But in what way is this Vedic? Our way of looking at it is that it is Vedanusari and Veda Aviruddha, not Veda Ucharita. For something to be Vaidika for us, it need not be essentially inside the Veda. It need not necessarily be Veda Ucharita. It can be Veda Anusari and it can be Veda Aviruddha also, right? That is also Vaidika only for us. So all Hinduism is Vaidika because it is Veda Anusari and Veda Aviruddha. Veda Pramanya is accepted by all the schools of Vedanta. For all these reasons, we consider it to be Vaidika. But when you encounter Indologists, when you encounter modern people, university intellectuals, you should remember from where they are coming. Why they don't call them Vedic, why they call them Puranic, you should remember, then you should argue with them. You should tell them, our way of calling Vaidika is different from your calling Vedic. Your Vedic is English word. Our Vaidika is Sanskrit word. For us, when you say Vedic, we take it as Vaidika only. For us, Advaita Vedanta is Vedic because it accepts Veda Pramanya. The Vishishtadvaita, Achintya Bheda, whatever schools of Vedanta we have, all schools of Vedanta, Vedanta itself basically is Vaidika because it is Veda Anusari. Right? You understand? And when you go to Swami Dayananda Saraswati, the founder of Arya Samaj, he said, all these Puranas are not Vedic, and there is a Vedic culture according to which there is no idol worship, only Havan, Yajna takes place, and through Yajna only you can talk to various, that too only Vaidika Devatas, we can interact with them, all the Vedic gods, and for him only Vedic gods exist, Mitra, Varuna, Savita, Pusha, all these gods, only they exist, Vaidika Devatas exist, Puranic Devatas he doesn't accept at all. He says, I interact with them. And that was revived, that culture of that so-called pure Vedic culture
was revived by him and it was made into Arya Samaj. Today we have many Arya Samajis all over India. And these Arya Samajis, they don't believe in, say, Ganapati, Shiva, Krishna, all these gods as gods at all. They worship Rama, they have a respect for Rama, but as a great Aryan. Rama is a great Aryan for them. And Krishna also they respect, they have only respect, they don't worship. They don't worship the idol of Krishna or they don't worship the idol of Rama. They just say Rama and Krishna were great heroes of the Aryan society. And for them, the stories of Krishna in Mahabharata are itihasa, history. They accept it as history. And Krishna's story in Mahabharata is historical for them. And Rama's story in Ramayana is historical. These two are stories of great heroes of Aryan society. That's how they started looking at it. That's what Swami Dayananda Saraswati told them. And that's what they follow. And is there anything wrong in what they are saying? If you look at that from the modern, Indological or historical point of view, there is nothing wrong in what they are saying. If you go historically, yes, if you look into the original Veda mantras, you don't have these gods. So you too have to agree that they were not in the Veda mantras. And if you search inside the Veda mantras, probably you don't find any temple culture or Vigraharadhana or any such thing. You too have to agree with that. If you go search inside the Vedic mantras for in the Vedic text itself, if there is any evidence for that. So what Swami Dayananda Saraswati was doing was historically critically looking, historical critical perspective. If you look at that in a modern Indological perspective, he was doing correctly only. Probably he was also influenced by that. He was in colonial times, he was during the British rule, already Indology has come, people are talking about this, so he wanted to be correct according to Indology also, scientifically correct. So he wanted not to be wrong in that perspective also, so he was reviving that. There is nothing wrong in that. But when we call all these things as acceptable as Vaidika, we have a different perspective, we have a different logic. For example, when we talk about Itihasas and Puranas, we talk about them as Vedartha Upabrumhana. Itihasa Puranabhyam Upabrumhayet. We know this. So we look at Itihasas and Puranas as Vedartha Upabrumhana only. So we consider both Itihasas and Puranas as Vaidika because they are Vedartha Upabrumhana only. This is what Swami Dayananda Saraswati was not accepting. He was saying that no, there is nothing like Vedartha Upabrumhana. These are all concocted. These are all created, fictitious, artificially created stories. Sanatani log, he was using the word Sanatani in reference to those people who were before Arya Samaj, traditional Brahmins, traditional Hindus. He used to call them Sanatani. Whatever he found as wrong, superstitious in Hinduism, he used to attribute that to a word. He has a gali, he has a bad word, abusive word, Sanatani. So, pasand nahi aata to सनातनी, ये सनातनी है छोड़ दो, ये सनातनी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मूर्ख है, मूढ़ लोग है, ऐसे ही कुछ कुछ की बकते जाते हैं. So for him, Puranas were created by Sanatani log to exploit the people, to create superstitions in them and all that. But general Hindus, in general, believed in Puranic culture also. Historically, if you look at what was happening at that time, Swami Dayananda Saraswati was there, there was Raja Ram Mohan Rai, Brahma Samaj was there, and these people were believing in Upanishads, and they were also believing in Shankara, in Advaita Vedanta, and all that. There was a necessity of a modern man, English educated man, speaking through English logic, Western logic, and supporting the entire gamut of Hinduism, including idol worship, including temple culture, including Puranas, including Itihasas, including Agamas, everything. Who did that? Swami Vivekananda. That was the historical necessity at that time. It was without Swami Vivekananda, but for Swami Vivekananda,
we would have all thought that it is only logical, it is only scientific, only to follow Arya Samaj or Vaidika culture, pure, the so-called reconstructed Vaidika culture, the way it was reconstructed by Swami Dayananda Saraswati, or it is scientific only to follow the Upanishads in a Christian way. Actually, whatever Brahma Samaj was doing, it was a typically Christian. Every Sunday we meet at a point, like the Bible was read, Upanishads were read, there was a reader who reads, and there was a priestly culture, everything. When you look Ramakrishna Vivekananda movement, there is nothing like that. Do you have a Sunday mass? Do you have a reader? Do you have everything that Christians do? The imitation of Christianity that you have in Brahmo Samaj is absolutely gone. What Ramakrishna Vivekananda movement does is simply allow the entire Hinduism to get revived. That's all. छोड़ दो लोगों को, क्या भी करते हैं. अगर वैष्णव है तो वैष्णव रहने दो, शैव है तो शैव रहने दो, अद्वैत है तो अद्वैत रहने दो, द्वैत विशिष्टाद्वैत कुछ भी रहने दो. The entire Hinduism gets revived and gets logic, rationality, scientific arguments. Swami Vivekananda, through his modern, scientific, rational argumentation style, he argued for the revival of entire Hinduism, not focusing only on a certain aspect of Hinduism, right? This was a historical necessity, and that was fulfilled by Swami Vivekananda. Incidentally, he could do this because of a Pagal Pujari. कौन था? Ramakrishna Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa, a village priest. Because he was a priest in a temple, he was doing idol worship, he was worshipping that Kali idol, he was doing everything that a general Hindu does. So Vivekananda was inspired by him, so that made him get into the whole of Hindu culture. That was the historical necessity. If Swami Vivekananda continued in Brahmo Samaj, he was in Brahmo Samaj in his childhood. So nothing would have happened. It was a historical necessity that Professor Hesse sends him to Ramakrishna Paramahansa, and he gets inspired from there. And now the entire Hinduism, the whole of Hinduism, holistically, the completeness of Hinduism got revived. Now we have to articulate that, we have to speak about it, we have to put it in words in a very rational way, how actually we can talk about how that PauraNika culture comes into existence. What do we mean by Aagamika? The temple rituals, temple construction, and all the rules of the temple are described in books called Agamas. Okay? Agamas, they are called Agamas. And among Agamas, you have Shaiva Agamas, and Vaishnava Agamas, and Shakteya Agamas also. Temples of Shaivites, Shaivism, are constructed as per Shaiva Agamas. Temples of Shaivism, or they have rituals, pujas, daily sevas performed according to Shaiva Agamas. And in Vaishnava temples, construction of the temple, the method of construction is done according to Vaishnava Agamas, and the daily sevas, daily pujas are done according to Vaishnava Agamas. They have elaborate descriptions of where to place which idol, how to construct the tower, how to construct the walls surrounding prakaras, garbhagriha, where to place different gods, and how to do the pratishtha. Everything is described in each of these Agamas, Shaiva Agamas and Vaishnava Agamas and Shakteya Agamas. Because these Agamas are dealing with PauraNika Devatas and their temples, their idol worship, we have put them together, PauraNika and Aagamika together, as if they are one and the same culture. Actually, they are one and the same culture. Puranas are texts, Agamas are texts dealing with the actual practice, right? If you look at that from an Indological point of view, modern Western kind of perspective,
The Aagamika rituals are replacements for yajna. Whatever was happening in yajna is being replaced by Aagamika culture, the temple worship, idol worship, etc. There are elaborate books on these issues. If you are interested, there is a book by Stella Kramrisch, a book called Hindu Temple. You will get it in your library. Hindu Temple by Stella Kramrisch. Any modern book on Hindu temples usually introduces you to the relation between yajna and temple. Which aspect of yajna has been converted into which aspect of temple? How temple architecture has yajna roots and how temple rituals have yajna roots. They connected very clearly, very elaborately. There are many books which cover them. One of them is this Hindu Temple by Stella Kramrisch. And there are many books like, for example, there is a book called Nitya Sumangali by Saskia Kersenboom's story. It deals with the temple dancers. You know temple dancers. They used to hail from sex worker community. These sex worker community people used to become either Rajanartaki inside the court of a king or Devadasi inside a big temple. And this book, Nitya Sumangali, is a book by Saskia Kersenboom's story. It's a wonderful book on the entire Devadasi tradition. Today, if you go into the market, people talk very badly about Devadasis. They call them prostitutes. They call that culture as a decadent culture. They are all, that is an exploitation of women and all that. If you read this book, Nitya Sumangali, there is absolutely no mention of any of such bad things in the whole book. Only towards the end of the book, towards the end of the chapter, last chapter, in the last paragraph, she just says, there are some aberrations in this tradition today. I am not interested in dealing with those aberrations. That's all. That's the only statement she makes. But all the remaining book is dedicated to project the Devadasi tradition in a very positive way from an Agamic point of view, from the Shastra point of view. In that book also she gives the connections between yajna and temple, how Devadasi tradition itself is yajnik, how Devadasi tradition itself is part of Vaidika tradition she gives in that book. In Nitya Sumangali, there are many such books. Not only that, there is a book, it's not at the top of my head now, there is a book on Odissi also. In Jagannath temple also there was a Devadasi tradition. This book is on that, Devadasi tradition. And another Indologist, Western Indologist, has written a wonderful book on Odissi Devadasi tradition also. They too handle these things in the same way, in a very scientific, logical and rational way, but they connect yajna and temple. So there have been studies to show that there are connections between PauraNika aspects and Vaidika aspects. There is a book which shows which part of a Purana, which story of a Purana is connected to which story from Vedas. There have been books like that. Why Western Indologists themselves? What we say Vedartha Upabrahmana, we have just been saying, but some good Indologists in the West, they have connected the stories also. Which part of the Veda mantra is connected to which part of the Purana, how they are the Upabrahmana, how it is the same story in a different form. For example, we have Vritrasura Vadha. It's a Vaidika story. And if you go to Bhagavata Purana, it says all the Devasura Sangramas are a different form of Vritrasura Vadha only. In the very beginning of Bhagavata Purana, in the Avatarika of Bhagavata Purana, whoever you call it, whether Shuka Yogi or Vyasa or whoever, he is saying that if you want to decide which is Bhagavata Purana, the test is it should have Vritrasura Vadha. It should have Satyam Param Dhimahi Ityadi Gayatri Mantra. It should have. There is a list of features it should have if you have to decide it to be Bhagavata Purana. So what it is saying is that Vritrasura Vadha, which is there in the Vaidika mantras, got Upabrahmana through all the Devasura Sangrama stories in various avatars, is very clearly mentioned there. And there are books by Western Indologists which show you connections between Vaidika stories and Pauranika stories. That's one part of the story.
Another story, another part of the story is you have Loka Sanskriti in India. Right? You understand the Loka Samskriti, right? The folk culture, the English word they use is folk culture. They even use the word folklore. Folklore, Loka Vignan. They use the word Loka Vignan, Loka Sanskriti, Loka Geet, Loka Sahit. We use all these words, folk literature, folk songs, Loka Geet, Loka Sahit. Folk tale. Yesterday we were talking about Loka Katha. You have opened your mouth. I am very happy. You were silent. Okay. So correct. Loka Kathaye, folk tales. So all this culture that we have, the entire gamut of folk culture and all that. What happened to that? Does it have any relationship with Veda or Vaidika? Or PauraNika, or Aagamika, or did it remain the same where it is? If you see in Bengal, anywhere, if there is a Mansa temple, gradually a Mansa temple can be converted into a Durga temple at some point of the time. If there is another Gram Devata, that Gram Devata temple gradually gets converted into Kali temple. And if you talk to Indologists, they might even say that the Kali Ghat temple that we see was originally a folk temple. And the rituals that are performed today there, the cutting of the goat or whatever happens there, animal sacrifice happens there at Kali Ghat, they say that was originally only folk culture. Lok Sanskriti tha. Whatever rituals you see in temples, most of the particularly Devi temples, they were Gram Devata rituals that were being performed, and they got converted into Devi Ma temples. And it's not wrong. Actually, you see that happening even today, that many folk temples are changing into what we call classical temples. We use the word classical temples. They are changing into classical temples, and we can use the word classicalization of a folk temple also, classicization of a folk temple also. So, if Dayananda Saraswati is correct, if Indologists are correct, if scientific researchers on the pure Vedic culture, original Vedic culture are correct, it must be true that there was only Havan that was happening in the Vaidika period, and Vigraha Aradhana, Murti Aradhana was happening in folk culture. This is folk. Actually, I can put hands here. There can be bangles on the hands and a very big tongue. Right? Devi Ma has a right, big tongue and big bulged eyes, and hands are like this, and there are bangles to the hands. That kind of sculpture, we call it as naive sculpture. They use a word naive, rural type, rustic type sculptures. In painting also, if a rural type painting is there, we call it naive painting, N-A-I-V-E, naive. The word naive is used to refer to rural innocence, uneducated innocence and all that. If, for example, if somebody talks to you without shastric rigor, something he comes and says, हाँ मैं भगवद गीता पढ़ चुका हूँ, भगवद गीता में तो कर्म योग रहता है, कर्म योग ये है, काम छोड़ दो, हाँ काम करो फिर भी काम को छोड़ दो, ऐसा बोले तो तुम बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो कर्मफल संन्यास योग है, कर्मफल संन्यास योग को शॉर्ट में कर्म योग बता दिया है, कर्मफल ये है, कर्मफल संन्यास ये है, बोले तो नहीं नहीं मैं जानता हूँ, कर्म को छोड़ दो, नहीं तो कर्म बोले तो तुम बोलते हो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग नाइव है, क्या बोलते हैं उसको, नाइव, N-A-I-V-E. इट इज अनसाइंटिफिक, अशास्त्रीय, rural, innocent also. They are actually not bad people. They are not very arrogant also. उसको कुछ समझ में नहीं आता, जो कुछ भी सुन लिए
टेम्पल में प्रवचन में उसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं, आधा आधा समझ कर कुछ कुछ की बच के जाते थे, है ना। वो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, नईव लोग हैं। ऐसा नईव आदमी होता है, नईव फिजिक्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी पढ़ते हैं उसको आधा समझ लेते हैं, नईव फिजिक्स बोलते जाते हैं, नईव केमिस्ट्री होता है, नईव मैथ्स भी होता है, सब सब्जेक्ट्स को नईव बना देते हैं। ऐसा नईव पेंटिंग भी होता है, नईव स्कल्पचर भी होता है। ये रूरल लोगों का जो स्कल्पटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, उसमें आगम शास्त्र अनुसारी मूर्ति निर्माण नहीं होता है। स्थापत्य में, विग्रह निर्माण शास्त्र में इसके लिए इतना बड़ा शास्त्र है, उसमें हम ताड़ प्रमाण बोलते हैं। ताड़ प्रमाण के अनुसार इस तरह ही बनाना है, इतना ही प्रपोर्शन होना चाहिए। वह राजा का विग्रह है तो उसका प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए, देवता का विग्रह है तो इस प्रपोर्शन में होना चाहिए, स्त्री मूर्ति है तो ऐसा। इस बहुत शास्त्र है उसके लिए। वह शास्त्रीयता इस कल्चर में नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं स्कल्पचर, रूरल स्कल्पचर। ये फोक टेम्पल्स में ये रूरल स्कल्पचर होता है, नाइव स्कल्पचर, शास्त्रीयता नहीं होता है। फिर भी उसमें तो वह आस्था है, उसकी पूजा करने वालों में आस्था है। वह इट कैन इन्वोक, it can bring inspiration into the worshippers. Just looking at the big tongue and those bulged eyes and the hands, they get bored, right? They get inspired. Actually, those people who are able to get bhar are much better than us, because all our logic, all our rationality is not bringing any bhakti in us. We go stand there and think of all our tarka, nyaya, mimamsa, vyakarana. Nothing happens. No bhar, no bhakti, no rasa. This is a big problem. Learning logic is a huge hurdle for adhyatmika sadhana, right? भक्ति नहीं होता है, इमोशन नहीं आता है, रस नहीं आता है, भक्ति रस नहीं आता, कुछ नहीं आता। जाकर के लॉजिक करते बैठ जाते हैं उधर। लॉजिक को लेकर क्या करना, शास्त्र को लेकर क्या करना, पांडित्य को लेकर क्या करना। वे लोग भाग्यवान है इसलिए कि उनको भार भक्ति का एक सिम्टम है, उनका भक्ति उस तरह का है। जब रामकृष्ण परमहंस उपदेश करते थे लोगों को, कुछ लोग उधर बैठकर भार जैसे आता है वैसे ही घूमते थे, ऐसा घुमाते थे सर को। स्वामी विवेकानंद उधर से जाते और पूछते कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो कर नहीं सक रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, मुझे भी ऐसा आना चाहिए घुमाने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद बोले तुम में क्षमता है अंदर, उसको सहने के लिए। इन लोगों को सहने का क्षमता नहीं है, बलहीन है, इसलिए घूमते हैं सर, घुमाते हैं सर को। भार जिसको आता है वे ऐसे लोग हैं, उनमें शरीर में क्षमता नहीं है। जो भक्ति आता है, भक्ति रस आता है, उसको संभलने में क्षमता नहीं है, इसलिए ऐसा घुमाते रहते हैं। हम अगर ध्यान में रहते हैं, हम भी आवाहन ही करते हैं ना, नारुद्रो रुद्रमर्चयेत इज द प्रिंसिपल। नारुद्रो रुद्रमर्चयेत का अर्थ यह है कि तुम रुद्र का आवाहन करना है, तुम्हारे ऊपर आवाहन करना है, तुम रुद्र बन जाना है, तभी रुद्र का अर्चन कर सकते हैं। हम भी आवाहन करते हैं, हर रोज आवाहन करते हैं। आवाहयामि, we keep saying in every Shodashabsara puja also we keep saying आवाहयामि। Same thing, भार is आवाहना। भार क्या है? आवाहना है। वो आवाहन हो रहा है, वो आधि दैविक जो है, आधि भौतिक का, उसका आवाहन कर लेते हैं, मगर उसको संभल नहीं सकते, इसलिए सर घुमाते रहते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जैसे बने तो भक्ति रस होता है, आंसू निकलते हैं, फिर भी स्टेबल बैठ सकते हैं, है ना। हमें ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, तो सब वेस्ट है। उधर जाकर बोलते हैं कि अच्छा है टेम्पल, हाँ अच्छा दिखता है, मैं भी देख चुका हूँ, स्कल्पचर अच्छा है, फोटो निकाले, सेल्फी निकाले। नहीं तो मैं न्याय जानता हूँ, मैं मीमांस जानता हूँ, मैं व्याकरण जानता हूँ। व्याकरण में कालीघाट को क्या बोले, व्याकरण में क्या बोलता है कालीघाट? कालीघाट तो व्याकरण में नहीं आता है ना, क्या बोलते हैं उससे। उधर जाकर कालीघाट में जाने के बाद भौर आना, या तो आंसू निकलना, या तो समाधि आ जाना, सविकल्प या निर्विकल्प समाधि आ जाना, वही उसका पर्पस है ना। वहाँ जाने के बाद व्याकरण नहीं करना, मीमांस नहीं करना,
डुकरुई करने नहीं करना, है ना। डुकरी करने वहां जाकर नहीं करना, वहां जाकर तो भक्ति आना है, रस आना है, रस मिलना है। ये लॉजिक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, शास्त्र बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है भक्ति में। ये इधर इन लोगों का ये भाग्यवान है, उनको ये नहीं रहता। नाइव कल्चर उनको इंस्पिरेशन करता है। इसलिए हम नाइव कल्चर को हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से नहीं देखते। नाइव कल्चर ही अच्छा है, ये उनको इंस्पिरेशन कर सकता है। इसलिए मगर इस नाइव कल्चर को जब हम विग्रह निर्माण शास्त्र से, स्थापत्य से एक अच्छा सा स्कल्पचर बना दे रहे हैं, यह वैदिक बन रहा है, वह आगमिक है। स्थापत्य और आगम, these two, स्थापत्य and agama are very closely connected. All the स्थापत्य students in India, they study agamas also along with स्थापत्य. Okay, there was a very big sthapati called Ganapati Sthapati in Tamil Nadu. Now he left a very great legacy. His students are there, and now there are Sthapatya Gurukulas also, like Vaidika Gurukulas. There are Sthapatya Gurukulas. They are teaching Sthapatya there. They learn Agama along with this. So with the combination of Sthapatya and Agama, they learn how to construct a temple, how to sculpt a murti and all that. There is a Shastra in that. If you go into that Shastra, you see that the mudras there are closely connected with Bharata's Natya Shastra, the hastas there and all that. They are very closely connected with each other. And we use a word called stylization. Stylization का मतलब है नाट्य में भी स्टाइलाइजेशन होता है। स्टाइलाइजेशन नाट्य में जब होता है उसका मतलब ये है हम आइडियल मूवमेंट करते हैं। नाट्य में जो मूवमेंट होता है, नाट्य शास्त्र में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। यू नो दीज वर्ड्स, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। लोकधर्मी का मतलब है जैसे हम चलते हैं, यह लोकधर्मी है। नाट्यधर्मी का मतलब है ऐसा नहीं चलना। कोई डांसर ऐसा चलता है क्या? डांस में कैसे चलते हैं? उसके लिए एक तरीका होता है ना, इतना एंगल तक ही उठाना है, इतना ही उसको नीचे रखना है और इतना ही उठाना है। स्टेप्स है उसके लिए, और देयर इज अ प्रोसीजर। द वे दे वॉक इनसाइड द डांस, इट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग। दैट काइंड ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड नाट्यधर्मी, एंड नाट्यधर्मी इज आइडियलाइजेशन। क्या है? लिख लो ना, आइडियलाइजेशन, आइडियल वॉकिंग। आइडियल वॉकिंग जो है उसको नाट्य में ला लेते हैं, वह स्टाइलाइजेशन होता है, उसको हम स्टाइलाइजेशन बोलते हैं। आइडियल, IDEAL, वही तो पूछ ले। आइडियलाइजेशन, आदर्श जो है, आदर्श को उसमें रखते हैं। हम बिंदी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, है ना? ये लोकधर्मी है। नाट्य में कैसे लगाएंगे? नाट्य में मिरर को ऐसे रखना और पीछे से इसको लाकर इधर बिंदी लगाएंगे। यह आदर्श पद्धति है, आइडियल वे ऑफ पुटिंग द बिंदी, राइट? दैट इज आइडियलाइज्ड बिंदी लगाने का तरीका है। इसको स्टाइलाइजेशन बोलते हैं। और जो विग्रह रहता है, विग्रह में अगर वेस्ट बनाना है तो 0 साइज रहना है ना? देखो किसी भी स्कल्पचर में देखो 0 साइज वेस्ट ही रहता है। और जब चेस्ट बनाना है तो परफेक्ट चेस्ट है। जैसे कि कोई भी विग्रह में जो गॉड है वो जिम जाने वाला है, कोई भी औरत है वो रेगुलर जिम में जाता है। परफेक्ट साइज, जो कुछ भी मेजरमेंट्स है, कितना कितना रहना है, सब परफेक्ट रहते हैं। इसका मतलब है आइडियल क्या है? आइडियल, हमको भी आइडियल है ना। हम जिम क्यों जाते हैं? आइडियल बनाने के लिए, हमारे बॉडी को आइडियल बनाने के लिए जाते हैं। वो आइडियल जो साइजेस हैं, आइडियल फिगर के जो प्रोपोर्शंस है, वह आइडियलाइजेशन होता है विग्रह निर्माण में। इस आइडियलाइजेशन को हम स्टाइलाइजेशन
बोलते हैं, स्टाइलाइजेशन, आर्टिस्टिक बनाना उसमें। अगर एक क्रीपर, एक लता को करना है, एक लोकधर्मी लता तो लोकधर्मी लता ही होता है, जैसे उगता है वैसे ही उगता है, जैसे बढ़ना है वैसे ही बढ़ता है। मगर स्कल्पचर में अगर लता है तो क्या होता है, उसके लिए एग्जैक्ट लाइन होता है, उसके लिए एग्जैक्ट सर्कल्स होते हैं, फ्लावर एग्जैक्टली वैसे कैसे रहना है वैसा होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलाइजेशन ऑफ लता, स्टाइलाइजेशन ऑफ द क्रीपर। एंड इफ देयर इज ए लायन, हाउ इज ए लायन जनरली, you see, lion has hair and it doesn't comb, so does it comb? कॉमिंग होता है नहीं ना, इसलिए कैसे की रहता है हेयर। मगर देखो स्कल्पचर में जब लायन होता है तो एग्जैक्ट लाइंस रहते हैं। लायन के जो आंख होते हैं बड़े तो होते हैं, मगर स्कल्पचर में जितने बड़े हैं उतने तो नहीं होते। स्कल्पचर में बहुत अतिशयोक्ति होता है ना, एग्जैजरेटेडली बिग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलाइजेशन। इसको एक स्टाइल है, उसको एक पद्धति है, एक आर्टिस्टिक पद्धति, एक प्रोपोर्शन है, इसमें लाते हैं। ये सब स्टाइलाइजेशन के वजह से होता है। स्टाइलाइजेशन के पीछे आइडियलाइजेशन है, आइडियलाइजेशन और स्टाइलाइजेशन के पीछे नाट्य धर्मी है। नाट्यधर्मी लोकधर्मी से अलग होता है। नाट्यधर्मी से लोकधर्मी इसलिए अलग होता है कि अपने अंदर आदर्श के लिए एक ख्वाहिश है, आकांक्षा है। हम चाहते हैं कि सब कुछ आदर्श हो। आदर्श को वह मैच करता है, ये जो हम देखते हैं वह मैच करता है। मैं यूंगियन साइकोलॉजी बोल रहा था। आर्कीटाइप्स, अपने अंदर आर्कीटाइप्स हैं। इसमें हम एक आइडियल लायन हो, एक आइडियल क्रीपर हो, एक आइडियल याली, आई वाज टॉकिंग अबाउट याली यस्टरडे, एक आइडियल याली हो, एक आइडियल राम हो, एक आइडियल सीता हो। इसका एक अंदर वी हैव ए डिजायर टू लुक एट दैट, because there is an ideal Rama inside. When we see the ideal Rama there is a resonance, just as in Abhivyaktivada and Rasa, the samskara, the vasana of the inner bhava matching with the bhava, it brings a resonance in us. The same thing happens in every sculpture, in every yantra, in every Agamic temple also. Whatever we wanted to happen is happening there. We like it, that's why we get attracted to that. That's how the Sthapatya Shastra has come into existence, Agama Shastra has come into existence. And it's an abstraction, like Nyaya does the abstraction of all the actual objects, actual padarthas have been done into a certain number of categories, padarthas only in Nyaya. That's an abstraction. Abstraction का मतलब है ये actual material से उनके categories बनाना, वर्गीकरण बनाना, उन द्रव्यों में से जाति को निकालना। ये सब प्रोसेस जो है इंडक्टिव प्रोसेस, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये सब जो है ये इसमें भी चल रहा है, नाट्य में भी चल रहा है, विग्रह निर्माण में भी चल रहा है। उसको एक आइडियल स्टाइलाइजेशन, आइडियलाइजेशन बनाकर क्लासिकल टेम्पल को बनाते हैं। तो क्लासिकल टेम्पल क्या है, फोक टेम्पल को स्टाइलाइजेशन करना, नाइव स्कल्पचर को स्टाइलाइज्ड स्कल्पचर करना। जो रूरल ग्रामीण शिल्प कला है उसको शास्त्रीय शिल्प कला बना देना, यह इसमें चल रहा है। यह तो जो टेम्पल है, रूरल टेम्पल है, रूरल टेम्पल भी नाइव टेम्पल होता है। रूरल टेम्पल में जो स्ट्रक्चर है वही भी नेचुरल, नाइव, प्राकृत होता है। प्राकृत लोग प्राकृत ही हैं। प्राकृत का मतलब यह नहीं है कि नीच दृष्टि से हम देखें, प्राकृत ही सबसे अच्छा है, इसलिए कि वह प्रकृति से नज़दीक है, प्रकृति के समीप में है, इसलिए प्राकृत अच्छा ही है। फिर भी विद्यावान आदमी क्या बोलता है, उसको हम स्टाइलाइजेशन करेंगे, आइडियलाइजेशन करेंगे, इस तरह उसको क्लासिकल बना देता है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि फोक को, लोक संस्कृति को आइडियलाइजेशन करने से, स्टाइलाइजेशन करने से आगमिक संस्कृति आ गया है, पौराणिक संस्कृति आ गया है ना। इसको आइडियलाइज करने में, इसको स्टाइलाइज करने में भाग किसका था,
वैदिक का था। इसलिए जो हम पौराणिक बोलते हैं वह वैदिक और लोक संस्कृतियों का सम्मेलन है। वैदिक और लोक संस्कृतियों का सम्मेलन ही पौराणिक है। लोक संस्कृति में जो विग्रह थे, विग्रह निर्माण था, मूर्ति थे, मूर्ति पूजा थी, इन सब को वैदिक आकर आइडियलाइजेशन बनाया, स्टाइलाइजेशन बनाया, उसका एक शास्त्र बनाया। वैदिक का यही खूबी है कि शास्त्र रहता है, सब कुछ के लिए शास्त्र होता है उधर। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मंत्र तो अफ्रीका के ट्राइब में भी रहता है, साउथ अमेरिका के ट्राइब में भी मंत्र तो रहता है, क्या नहीं रहता है? मंत्र शास्त्र नहीं रहता है। उसके पास मंत्र शास्त्र नहीं रहता है, हमारे पास मंत्र शास्त्र है। जो कुछ भी वैदिक में है वह सब जनजाति लोगों में रहता है, मगर उनके पास उसके लिए शास्त्र नहीं है, इधर शास्त्र है। ये विग्रह निर्माण जो नाइव स्कल्पटिंग में करते हैं वे लोग, उसके लिए उनके पास शास्त्र नहीं है। विग्रह निर्माण के लिए एक शास्त्र बनाना वैदिक लक्षण है, यह वैदिक पद्धति है। लोक संस्कृति कहाँ से आई? हम कहाँ से आए? वहीं से आया है, प्रकृति से आया है, इसलिए उसको प्राकृत बोलते हैं। लोक संस्कृति तो आधुनिक शब्द है, उसका पुराना शब्द प्राकृत था, है ना? प्राकृत है ये लोग। प्राकृत का मतलब क्या है? प्रकृति जैसा है वैसे ही रह जाएंगे। किधर से आते हैं? किधर से आते हैं? वैसे आते हैं लोग, ऐसे ही रह गए हैं, उनका नेचुरल कल्चर है ना? लोक संस्कृति का कोई ओरिजिन उधर से है इधर से है नहीं होता है। दुनिया भर लोक संस्कृति है ना, दुनिया भर लोक संस्कृति कैसे आए? इधर भी लोक संस्कृति वैसे ही आया है। और वैदिक संस्कृति भी एक तरह का लोक संस्कृति ही है। वेद मंत्र भी एक तरह के लोक गीत ही हैं, मगर एक भिन्न तरह के लोक गीत हैं, है ना? सब कुछ लोक संस्कृति ही होता है, मगर वैदिक तरह का लोक संस्कृति और भिन्न तरह के लोक संस्कृति के सम्मेलन में एक दूसरा संस्कृति आ गया है, तीसरा हम बोल सकते हैं, तीसरा संस्कृति आ गया है, उसका नाम पौराणिक हो गया है। इसीलिए हम कोई अगर हमसे बोला कि शिव एक फोक कल्चर, फोक गॉड है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शिव तो फोक गॉड ही है, क्या उसमें बुराई है क्या? अगर शिव फोक गॉड है तो उसमें बुराई है क्या? गणपति एक फोक गॉड है, हाँ होगा, फोक गॉड ही होगा। तुम्हारा जो शिवलिंग है एक फोक कल्चर का, लोक संस्कृति से आया है, हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहीं पढ़ लिए कि यह फोक कल्चर से आया है, फोक कल्चर से आया है, उसमें अफेंड होने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं कि अपना संस्कृति वैदिक और लोक संस्कृतियों के सम्मेलन से ही निकला है। इस सम्मेलन को आर्यन द्रविडियन बोल दिया गया था। वैदिक को आर्यन बोल दिए, लोक को द्रविडियन बोल दिए, और उसके बीच में झगड़ा भी करवा दिए। वे लोग झगड़ा नहीं किए, ये बुक्स में झगड़ा होता है। आर्यन और द्रविडियन एक दूसरे को फेस किए और झगड़ा करना शुरू हो गया, मारते रहे। ये लोग टाइम मिशन मिला इनको, जाकर के देखे वो उधर जाकर जो झगड़ा हुआ इसको देखे हैं। कभी भी दो संस्कृति या दो आदमी या दो परिवार एक के समीप एक आते हैं तो थोड़ा तो टेंशन होता है। जब शादी होता है तो दो परिवार आते हैं ना, दो परिवार एक जगह आते हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़ा सा झगड़ा होना ही है। अगर झगड़ा नहीं हुआ तो शादी नहीं हो सकता है। शादी में एक आचार है, झगड़ा होना है, ऐसा थोड़ा सा होता है।
बाद में क्या होता है, कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में दूल्हा और दुल्हन में भी झगड़ा होना ही है, नहीं तो मुश्किल है। श्रृंगार में जो ये परिरंभण क्रीड़ा, मनमथ क्रीड़ा के बारे में जो शब्द प्रयोग होता है, उसमें झगड़ा के शब्द बहुत प्रयोग होते हैं। फाइटिंग के वर्ड्स का यूज होता है, फाइटिंग होता है। और परिवार में जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी बहुत झगड़ा होता है, मगर झगड़ा से कंप्लीट नहीं होता है ना। शायद फोक और वैदिक के बीच में भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ होगा, मगर बाद में सम्मेलन हुआ होगा। लोग झगड़ा करते ही बैठ जाते नहीं है ना, और झगड़ा बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो आर्यन द्रविडियन कॉन्फ्लिक्ट जिसको इन लोग बताते हैं, इसको एग्जैजरेटेड बनाकर इसको यही चला है बोलकर हमको बोल देते हैं। शायद हुआ होगा थोड़ा सा, वो आर्यन भी नहीं है, वो द्रविडियन भी नहीं है। सही शब्द वैदिक और लोक है। सही शब्द क्या है? वैदिक और लोक। आर्यन द्रविडियन को कुएं में फेंक देना, अगर कुआं नहीं मिला तो समुद्र में फेंक देना, कुचल देना उसको। आर्यन नहीं है, द्रविडियन नहीं है, अनसाइंटिफिक बात है, आउटडेटेड बात है। कहीं भी आर्यन नहीं है, द्रविडियन नहीं है। आर्यन के स्थान में क्या प्रयोग होना है? वैदिक। द्रविडियन के स्थान में क्या प्रयोग होना है? लोक। और वैदिक और लोक के बीच संघर्षण हुआ था, हुआ होगा, थोड़ा सा होना ही है। बाद में संस्कृतियों का सम्मेलन हुआ। ये मेलन से जो संस्कृति आया है वही हिंदुइज्म है। अब जो हम हिंदुइज्म देख रहे हैं वह मेलन से आया है। उस मेलन में लोक मूल भी हो सकते हैं। इसमें कोई फोक रूट्स अगर बता दिए इसका रूट फोक में है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ होगा, फोक भी हमारा है, जनजाति भी हमारा है, वैदिक भी हमारा है ना। लोक संस्कृति अपना है कि नहीं? मानसा अपनी देवता है कि नहीं? ग्राम देवता अपने देवताएं हैं कि नहीं? सब अपने ही हैं। जनजाति लोग भी, संताल भी अपने लोग हैं। उनके जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, सब अपने हैं। अपने बीच में थोड़ा मेलन भी होता है, थोड़ा घर्षण भी होता है। घर्षण के दिन तो बीत गए हैं। हजारों साल पहले थोड़ा घर्षण हुआ होगा, आज उसका एक भी तिनक भी ट्रेस भी नहीं है उसका। हम दोस्ती में रहते हैं। इस दोस्ती में एक दूसरे के रूप में कन्वर्जन होते रहता है। फोक क्लासिकल बन जाता है। एक लोक संस्कृति का देवालय, लोक मंदिर, वैदिक मंदिर बन जाता है। इसमें लोक देवता जो है उसको वैदिक मंत्र पढ़ाते हैं, वैदिक मंत्र का पाठन होता है, हवन होता है उसी मंदिर में। अगर कोई मंदिर में हम गए, पर्टिकुलरली साउथ में गए, तो बलिपीठ होते हैं उधर। मालूम है आपको? मंदिर के प्राकार में हम जब प्रदक्षिण करते हैं मंडप में, तो ऐसा एक पीठ आता है उधर। उसका एक डिज़ाइन भी होता है। मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, डिज़ाइन अच्छा नहीं बना सकता हूँ, मगर उसमें ऐसा डिज़ाइन में एक पीठ भी होता है उधर। उस पीठ के ऊपर अन्न रखते हैं। अन्न के ऊपर लाल रंग का थोड़ा पानी डालते हैं। ये सब उसको प्रसाद, नैवेद्य, बलि बोलते हैं। उस बलि में शायद पहले जो लाल रंग का पानी डाला जा रहा है आज, पहले उसमें एनिमल सैक्रिफाइस था, उसका रक्त था, खून था, उसको दे रहे थे। उसको क्या किया गया बाद में, जब ये लोक संस्कृति का मंदिर वैदिक संस्कृति का मंदिर बन गया, तो एनिमल सैक्रिफाइस को छोड़कर उसमें अन्न के ऊपर लाल रंग का पानी डालना प्रारंभ हो गया। ऐसा चेंजेस आ गए। लोक संस्कृति के मूल है। अभी कोई इंडोलॉजिस्ट आ गया, वेस्टर्न हिस्टोरियन आ गया, या यूनिवर्सिटी का हिस्टोरियन आ गया, बोल दिया कि तुम्हारा जो कामाक्षी टेम्पल है ना, पहले लोक टेम्पल था, लोक संस्कृति का टेम्पल था, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ होगा, उसमें क्या बुराई है। मीनाक्षी टेम्पल पहले लोक संस्कृति का टेम्पल था, हाँ होगा। तुम्हारा जो वैष्णो देवी है ना, वैष्णो देवी लोक संस्कृति का ही है, हाँ होगा। काल भैरव जो है वाराणसी में, वह लोक संस्कृति का था, होगा। सब कुछ
अगर हर एक मंदिर भारत में जो है उसको लोक संस्कृति से आया हुआ बताए तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ होगा, क्या है उसमें, क्या दिक्कत है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। उसमें मेलन है, वह सिर्फ लोक संस्कृति का नहीं है, लोक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का मेलन है। ये मेलन दोस्ती से हुआ है, मैत्री से हुआ है, परस्पर अवगाहना से हुआ है, परस्पर हृदय सम्मेलन से हुआ है। एक मिश्र संस्कृति आ गया है, इस मिश्र संस्कृति में हार्मोनी है ना, ये हार्मोनी से मिश्र संस्कृति आया है। तो ये पौराणिका और आगम संस्कृति वैदिक और लोक संस्कृति के बीच के मिश्रण से आया है, ऐसा कोई बताया तो उससे हम लड़ने का जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो हम बोल सकते हैं एक दो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति एक संस्कृति है, लोक संस्कृति और एक संस्कृति है, इनका इंटरैक्शन हुआ, इसको हम इंटरकल्चरल इंटरैक्शन बोलते हैं। इंटरकल्चरल इंटरैक्शन का मतलब है दो कल्चर्स के बीच में इंटरैक्शन, संवाद जो चलता है, सब जगह चलता है। एक हिंदू है एक मुसलमान है तो दोनों के बीच संवाद चलता है, और शायद कभी कभी एक मिश्र संस्कृति हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी आ सकता है। एक हिंदू और क्राइस्तव रहते हैं, इन दोनों के बीच संवाद होता है, एक मिश्र संस्कृति वहाँ भी आ सकता है। आप केरल में जाकर के देखिए, एक क्राइस्तव का चर्च होता है, कभी तुमको चर्च ही नहीं लगता, उसका बहुत बड़ा ध्वजस्तंभ होता है, बहुत बड़ा दीप स्तंभ होता है, दीप लगाया जाता है। जाकर के कहीं दूसरे जगहों में देखो, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में ध्वजस्तंभ होता है क्या चर्च में? इधर तो केरल में बहुत बड़े ध्वजस्तंभ होते हैं, दीपस्तंभ होता है, कहीं दीपस्तंभ होता है क्या? केरल में तो दीपस्तंभ होता है, इसलिए कि एक मिक्सचर हो गया, सिंक्रेटिज्म बोलते हैं ना, वो सिंक्रेटिज्म हो गया है, मिक्सचर हो गया है। सभी संस्कृतियों के बीच में, दो संस्कृति अगर है तो उनके बीच थोड़ा सा मिक्सचर भी होता है, थोड़ा झगड़ा भी होता है, इंटरैक्शन होता है। इंटरकल्चरल इंटरैक्शन में पहले थोड़ा झगड़ा, बाद में ज़्यादा स्नेह होता है, सिंक्रेटिज्म्स आता है। हम कल्चरल ट्रेडिशंस जिसको बोलते हैं, उसमें मॉडर्न ट्रेडिशन भी एक कल्चर है। माइक रहना, लाउड स्पीकर रहना, एक मॉडर्न कल्चर है ना। मानसा का एक मंदिर में लाउड स्पीकर लगाते हैं, है ना। अरे ये तो लोक संस्कृति है, लाउड स्पीकर नहीं लगाना है बोलते हैं क्या? उसमें गाना नहीं बजाना है ऐसा बोलते हैं क्या? गाना सीडी में प्ले नहीं करना है, पेन ड्राइव नहीं रखना है बोलते हैं क्या? पेन ड्राइव से गाना बजाते हैं मानसा देवी के टेम्पल में, ग्राम देवता के टेम्पल में, है ना। इसमें क्या हो गया, मॉडर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर के बीच इंटरैक्शन हो गया, इंटरकल्चरल इंटरैक्शन हो गया। आधुनिक संस्कृति और लोक संस्कृति का इंटरैक्शन हो गया। आधुनिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का भी इंटरैक्शन हो सकता है। वैदिक लोग अब जो पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं वेदों को, है ना। सीडी में प्रिजर्व कर देते हैं, पेन ड्राइव में प्रिजर्व कर देते हैं, हार्ड डिस्क में प्रिजर्व कर देते हैं। ये सब तो वैदिक और आधुनिक का इंटरेक्शन हो गया ना। ऐसा वैदिक और आधुनिक, वैदिक लोक, मुस्लिम हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन, इंटरेक्शन होते ही रहता है। स्थल पुराण, when we are talking about Sthala Puranas only, place legends, we have classified legends and then legends into place legends and place legends into sacred place legends. Sacred place legends are Sthala Puranas. So these, yes, they are from Loka Sanskriti into Vaidika Sanskriti. Okay, originally that place legend, that sacred place legend probably was a folk narrative. It was a folk legend only, but we have absorbed it into a Sthala Purana. And remember, in Shabarimala they were asking, do you have a Purana? Do you have a Purana? Do you have a Sthala Purana of this? And finally they brought some Purana there. But remember,
There are so many sthalas, so many kshetras, so many tirthas in India that for everyone, if you want to find a Purana documented, Sthala Purana documented in one Upapurana or the other, or in Skanda Purana, it is not possible. We Hindus worship according to our traditions, and most of these traditions are in memory. Most of these traditions are in oral form. No one can ask for books for everything. It has to be in book, it has to be in text, cannot be asked for. So, these folk legends, for example, how many folk legends can be there? If you go to a village, hundreds of folk legends in a single village can exist. So, lakhs of villages are there, lakhs into hundreds. How many folk legends, how many Sthala Puranas can be there? So, Sthala Puranas in number, in actual number, are probably even million. To document all of them in a book is not possible. So, if someone comes and asks me, show me a book, our only answer is, we are not people of books. Our religious tradition is not a religious tradition of books. We don't document everything in books. Most of it is in oral form, most of it is in memory form. So, we have to do a different kind of a research to verify whether it was there or not, it existed or not. We have to do oral research and memory research and all that. In the case of Shabarimala also, it is the same. The tradition has been there from a very long time. It is in memory, it is in oral form. Probably it was documented also, the one which Sai Deepak, the advocate of Shabarimala people, who is arguing in Supreme Court, he is showing such Puranas there. Maybe right, maybe wrong, but orally it was always there. Okay. So, the intercultural interaction is a common thing that happens all over the world. Here also it has happened, and as a result of intercultural interaction among many cultures of India, Janajati, tribal Sanskriti, folk Sanskriti and Vaidika Sanskriti, whatever we have got today, it has contributions from all sides. There is nothing wrong in accepting. There is, whatever is wrong is only to use this for breaking India. You know the word breaking India? There is a book called Breaking India by Rajiv Malhotra. He talks, that is from that book only, people are nowadays using the phrase breaking India. So, people are trying to show these mixtures, and they are showing that because there is a contribution from this side, contribution from this side, they are asking one side of people, you fight for your rights. And they are asking them to fight among themselves. There is absolutely no need to fight, and fight is also not going to take place, because the mosaic is so complexly built, it cannot be broken so easily. In spite of all their efforts, let them shout at the top of their mouth, nothing is going to happen. We are going to be united with the contribution of all our cultures, harmonized into a mosaic of a beautiful Hindu culture. We are going to remain united forever and forever. Okay? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्ण